Hey friends, hello, this is Nisha. Welcome to my channel Single Solution to All Problem. Today's topic is Do you speak with yourself? क्या आप अपने आप से बातें करते हैं? जब भी हम किसी को ये देखते हैं कि वो अपने आप से बातें करते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम सबके माइंड में आता है वो यही आता है कि ये तो पागल है, अपने आप से ही बातें करता रहता है. But they don't know even we don't know the magic secret behind टॉकिंग विद योर सेल्फ. अपने आप से बातें करने के पीछे क्या मैजिकल सीक्रेट है वो किसी को भी नहीं पता है. सो टुडे आई विल शेयर द 5 पॉइंट्स, 5 बेनिफिट्स ऑफ टॉकिंग विद योर सेल्फ. फर्स्ट पॉइंट इज यू आर द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन फॉर योर सेल्फ. आप अपने आप के लिए सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड पर्सन है. इफ़ यू आर टॉकिंग विद योर सेल्फ, इफ़ यू आर शेयरिंग योर फीलिंग विद योर सेल्फ, देन इट इज़ द पर्सन हुम यू कैन ट्रस्ट मोस्ट इज़ योर सेल्फ. जो आप सबसे ज़्यादा विश्वास अगर किसी पर्सन पे कर सकते हैं तो वो आप हैं अपने लिए. इसके अलावा आई थिंक कोई भी, अगर आप अपने आप को ही ट्रस्ट नहीं कर सकते तो आई डोंट थिंक कि ऐसा और कोई पर्सन आप फाइंड आउट कर सकते हैं जिस पे आप अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ यू आर द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन फॉर योर सेल्फ. Second magical secret is if you are learning any new thing, you need to practice. Then you can practice with yourself. For example, if you are learning a new language, you can practice your language words with yourself. If you are preparing for something, अगर जब हम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले जो चीज़ कही जाती है कि प्रैक्टिस विद योर सेल्फ, प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर. व्हाट इज़ द प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर? जो मिरर के सामने आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं वो क्या है? इट मीन्स इट इज़ द प्रैक्टिस विद योर सेल्फ, मीन्स टॉक विद योर सेल्फ बट इन द फ्रंट ऑफ मिरर. द पर्सन बिहाइंड द मिरर इज यू. सो इफ यू आर टॉकिंग विदाउट द मिरर, दैट इज द सेम थिंग, मीन्स you are talking with yourself but without the mirror. So if you are preparing for any speech, any debate, so the best thing you should prepare with yourself. means आपको अपने आप से ही बातें करनी है, अपने आप को ही समझाना है. अगर आप गलती कर रहे हैं, it will build your benefit. So this is the second most beautiful benefit of this talking with yourself. The third magical secret behind talking with yourself is English speaking. English speaking is just like a phobia in India. Everyone wants to speak in English. Everyone wants to improve their speaking in English, and they're going for the speaking courses, but they are not getting the result because they are fear of mistakes. They have the fear of mistakes. The main thing the tutor there taught you is think in English. Just think in English, then speak in English. Means you need to practice in your mind. Then what will be the difference if you are speaking with yourself? If you are practicing your words with yourself, there is the same thing. Means you can learn the English only a single way, that is think in English then speak in English. So you can practice same thing. It is you can speak your words with yourself. If you are speaking with yourself, the main thing, we always have the fear of making mistakes, that I will make some mistakes. That's why we don't speak in front of others. This is the main problem कि हम दूसरों के साथ इंग्लिश में बात नहीं कर पाते कि हमें एक डर रहता है कि हम मिस्टेक्स करेंगे. और अगर आप अपने साथ if you are talking with yourself, then that fear will also reduce. मिस आपका fear चला ही जाएगा. और the question everyone will ask is again the same कि what about the mistake, how we will learn. If we don't have the fear of mistake, then how we will learn? The answer behind this is the God has programmed our mind in such a way, like if we are doing some mistakes, then our mind suddenly strike us that I think something is wrong, I am doing something wrong. So when you get this kind of strikes, you can ask someone, you can search it that where I am wrong, what I am doing wrong. So you don't need anyone to practice. You can practice in front of mirror, or you can practice without the mirror. Even while you are sleeping, you can practice with yourself, you can talk with yourself. So this is the, I think, third biggest benefit of the talking yourself. And the fourth magical secret behind the talking with yourself is if you are talking with yourself, you are reducing your frustration, your stress and tension. This is the, I think, biggest benefit of talking with yourself, because our life is so busy, we are so stressful, we are finding someone to share to reduce our stress, but in this world no one has time for no one. So the ultimate person for reducing your stress is you. So if you are talking with yourself, you can reduce your stress, tension and frustration very easily.
And the last and the final point is, you are the person whom is available 24 hours for you. You can share your feeling anytime with you, because you are 24 hours available and free for yourself. And there is no fear of मेकिंग फ़न ऑफ योर फीलिंग की इस चीज़ का कोई डर नहीं है कि अगर आप किसी के साथ कुछ शेयर करेंगे तो आपकी फीलिंग्स का मजाक बना दिया जाएगा, अगर अपने आप के साथ ही आप अपनी फीलिंग्स शेयर। सो I think these are the really beneficial 5 magical secrets if you are talking with yourself, and I think everyone should follow this. I hope this will help you and you will like my video. Thank you so much. Bye bye.